This is Ashish Kyal here. Are you able to hear me loud and clear? Are you able to hear me loud and clear? If yes, then you can simply put in the comment box. On YouTube, I'm live on YouTube @KyalAshish, Instagram @KyalAshish again, and also on Facebook @AK Trading Gurukul. So क्या आप मुझे सुन पा रहे? अगर आप मुझे सुन पा रहे, so give me a big yes and thumbs up on the YouTube, and then we can very quickly proceed. Fantastic. I can see you are able to hear me. Perfect. Hi, this is Ashish Kyal here. Welcome again to Ashish Kyal Trading Gurukul. And I'm connecting to you from my resort at Cloud9 in Lonala. That's why you see a different background and picture. And it's very peaceful here. Very, very peaceful. Given these COVID times, I am assuming every one of you are safe and staying back at home. This lockdown period should be used as an opportunity to learn. So ensure कि आप इस lockdown period को use करें as opportunity to learn and utilize this time period where you always wanted to do something on the trading side, learn new methods, learn new techniques, and keep growing your trading kitty. Okay. तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा ऑप्शन एक्सपायरी डे ऑप्शन स्ट्रेटजी. नाउ मालूम है मुझे कि ये बहुत ही फेमस फैग वर्ड है जहां पे लोग जानना चाहते हैं कि एक्सपायरी डे को जीरो टू हीरो कैसे किया जाए ऑप्शंस को यूज करके. इसलिए मैंने ये हेडिंग रखी है कि एक्सपायरी डे ऑप्शन स्ट्रेटजी एक्चुअली होता क्या है और क्या आप सच में जीरो से हीरो बनते हैं उस दिन. उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बीच में रिलीज किया था जिसमें मैंने बताया था कि ये ऑप्शन के लिए सबसे ज्यादा कंड्यूसिव कौन सा स्ट्रेटजी होता है या ऑप्शन के बारे में क्या जानना जरूरी है. सो अगर इस पे ध्यान दे, इफ वी पे फोकस ऑन ऑप्शन एज एन इंस्ट्रूमेंट, दिस ऑप्शन instrument is actually used in order to ensure that you are taking a position in the market. Along with that, you are also taking an insurance. तो ऑप्शन एज एन इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट आई वुड से, क्योंकि यहाँ पर आप मार्केट में पोजीशंस ले रहे, अगर आपके फेवर में नहीं गया और आप ऑप्शन बायर है तो आप थोड़ा लूज करेंगे. पूरा का पूरा जो फ्यूचर्स में रिस्क है वो अनलिमिटेड रिस्क नहीं है. नाउ ऑप्शन राइटिंग के बारे में भी ये नहीं बोला जा रहा है कि ऑप्शन राइटिंग में अनलिमिटेड रिस्क है. मैं नहीं मानता उस चीज को. द रीजन बीइंग वेरी क्लियर, option writing will have unlimited risk only if you don't place a stop loss. Similarly, option buying will also have a risk to the extent of your capital if you don't place a stop loss. So जो theory में पढ़ा गया है कि option writer has unlimited risk and limited profit, theory समझने के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसे तो आप futures भी देखेंगे तो आपको unlimited risk है. option buy भी आप कर रहे हैं तो अगर आप देखेंगे इन अ वे आपने अगर 250 रुपीज दिया है ऑप्शन बाय करने के लिए और अगर आप जीरो तक वेट कर रहे हैं तो आपके कैपिटल जितना तो रिस्क आपको वैसे भी हो जाता है. सो थियरी के हिसाब से इट्स गुड टू अंडरस्टैंड. प्रैक्टिकली में अगर आप देखेंगे इस बाजार में, इफ यू अंडरस्टैंड इन दिस मार्केट, प्रैक्टिकली इट इज द ऑप्शन राइटर्स हु आर मेकिंग a lot of money in the market, and I've been telling this since 3rd of March onward. This is option sellers market, not option buyers market. So I'm going to explain you expiry day पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. पहले तो वो समझना है. अगर एक्सपायरी डे पे करेंगे तो क्या लॉस हो सकता है और क्या प्रॉफिट हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी भी समझेंगे, जो मैं आपको समझाऊंगा. और इट्स ग्रेट टू सी अंजू ओवर हियर. नमस्कार आपको भी. और मेलविन इज सेइंग निफ्टी इज नॉट फॉलोइंग एनी टेक्निकल्स इन लास्ट 2 months. व्हाट इज रॉन्ग इन ऑल टेक्निकल्स? न्यू टेक्निकल्स आर कम इन मार्केट. मेलविन, ऐसा नहीं है. मार्केट लास्ट 2 महीने में बहुत सुपर परफॉर्म कर रहा है. टू बी ऑनेस्ट, आई एम श्योर इफ कैनिल इज हियर फ्रॉम a mentorship batch of November, he will tell you he made lot of money in this market.
इनफैक्ट अगर आप ऑप्शन राइटर होते तो ये 2 महीने में आपने काफी पैसा बनाया भी होता बाजार में। तो ये 2 महीने में टेक्निकल्स काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। If I have to ask you one more thing, do you remember the levels that I have talked about? 14,250. 14,250, I have told very clearly, markets have not given a single close below that 14,250 level. 14,250 मैंने कितने टाइम से मैं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट CNBC पे भी मैंने वो लेवल्स की बात की थी, आज तक उसके नीचे क्लोज नहीं मिला है। मेरे लास्ट वेबिनार में मैंने बताया था 14,221, उसके नीचे क्लोज नहीं मिला। Post that, if you refer my yesterday's tweet, anyone follows me on Twitter @Alashish? If you follow me on Twitter, say a big yes. Yesterday morning itself, I tweeted, Nifty has now again managed to bounce back without closing below 14,250. Do not be biased on the sell side. The market can again start showing a pullback on the upside. And exactly वैसा ही हुआ। सो अगर टेक्निकल नहीं चल रहा है तो एक और चीज, आज के दिन में हमने निफ्टी पे कॉल भी दिया था, 2 दिन पहले भी निफ्टी पे बाय कॉल दिया था और दोनों में पैसा बना है। 100 पॉइंट का मूव मिला है। वी गेव अराउंड 14,560 टुडे एज पर स्पॉट प्राइस, नियरली अराउंड वहां से निफ्टी काफी अच्छा मूव दिखाया। एंड इवन ऑन द 2 days बैक, सो इवन ऑप्शन में, फ्यूचर्स में, इट इज वर्किंग वेरी वेल। सो अगर आप टाइम साइकिल यूज करना चाहते हैं या जानते हैं, so you might really understand कि in fact साइकिल के बेसिस पे मैंने कहा था कि मंडे अगर फॉल आएगा, अगर मंडे फॉल नहीं आया इसका मतलब मार्केट्स को नीचे नहीं जाना है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म का साइकिल था जो बॉटम आउट हुआ था। सो what I am trying to communicate is that you should not be looking at this market as technicals नहीं चलता है। आप जो अप्लाई करें शायद वो मेथड को थोड़ा रिफाइनमेंट करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी समझने के साथ, और इस मेथड में यू माइट हैव टू क्लियरली यूज टाइम साइकिल्स, क्योंकि टाइमिंग दिस मार्केट हैज बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, विच इज वेरी क्रूशियल। सो टाइमिंग द मार्केट इज वेरी क्रूशियल। अगर आप मार्केट को टाइम नहीं कर पा रहे तो आप पैसा नहीं कमा सकते। सो टाइम कैसे करा है मार्केट को इस बाजार में? टाइमिंग, हाउ डू यू एंश्योर दैट यू आर टाइमिंग द मार्केट? उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीरियोडिकली बाजार में एक लो बनता है। नाउ दैट लो कैन बी एवरी 55 days. दैट्स वन साइकिल विच आई फॉलो. There is another cycle on Bank Nifty 108 days, which works fantastically well. There is a short-term cycle which we follow, which is somewhere around 160 period on a 15-minute chart. You can apply that. So there are multiple cycles that work on the market, and basis of that cycle, if you are an option trader, option buyer or seller, you can make either side of it. You can make a lot of money. So इसके लिए, so what I'm trying to say is, if you want to be trading in option, everyone tells you option strategy, but no one tells you what is the direction of the market. They tell you have to write option, you don't need a direction of the market. अरे भाई, अगर आप बता रहे हो कि मार्केट रेंज में रहने वाला है, that is also a prediction, right? How is not a direction? It's a non-directional move. That is still an assumption कि it's not going to trend. So that is an assumption still. So how can you say कि option writer के लिए, or if you are writing both call and puts, you don't really have to worry? No, ऐसा कुछ नहीं है. So Jayesh is asking me how to, which are important time cycles, how to read about it. I'm going to be talking about time cycles in my webinar on 8th and 9th of May, 2 days of program Master of Waves में. उसमें बात करूंगा डिटेल में about Elliott wave and about time cycles, दोनों को क्लब कैसे करना है. Jayesh, so I'm going to talk there. अभी तो I'm going to keep it only for few more short period of time, this webinar. So okay, so next thing is, if you have been following me on YouTube, okay, guys, if you are following me on YouTube, and you can clearly see that I have been talking about markets with respect to crucial levels. Do you remember last Friday मैंने एक level बताया था बाजार के ऊपर? वो level कौन सा था? Anyone remembers that level? 14,250 के नीचे close करे, या कौन से level के ऊपर we wanted to buy, so that we know that the market is going to be reversing back on the upside. So you need to ensure you are not clearly getting confused, because ये levels बहुत important होते हैं. 14,526 is one of the levels that I talked about. Now
option as an instrument, how is this instrument used? ऑप्शन में जैसे मैंने pitfalls of options बताया था, उसमें if you look at it, the more number of days to expiry, at least 2 weeks and more, okay, it's better to buy option. That's one. Second, if it is only within a week, if the expiry is only within a week, buying out of the money option will not give you money, because that is the basic math which does not function. So if short term इन द मनी ऑप्शन आप बाय करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी बाय करें तो पैसा नहीं बनेगा. अब एक्सपायरी डे की स्ट्रेटेजी नॉर्मली होती क्या है? ऑन दैट एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी, what people are actually trying to do and achieve is you try to buy an out of money option. For example, निफ्टी अभी चल रहा है समझिए 14,600. if nifty is quoting somewhere around 14,700 या 600, 14,600, आप करते क्या, ऑप्शाई एक्सपायरी डे पे 14,700 का कॉल बाय कर लेते हैं, 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी. नाउ इन दैट 6 आवर्स ऑफ टाइम आप निफ्टी को फरारी के तरह मूव करने के लिए बोल रहे हैं, ओके, और जबकि वो बैलगाड़ी की तरह चल रहा है. सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप उसके इंजन में उतनी कैपेसिटी नहीं है, लास्ट के 2 महीने में आप देख सकते हैं, और आप उसे फरारी की तरह भगाने की कोशिश कर रहे हैं बाय बाइंग एन ऑप्शन व्हिच इज 14,700 व्हेन निफ्टी इज कोटिंग एट 14,600, तो आपका पैसा बनेगा क्या? ट्राई एंड थिंक अबाउट इट. सो व्हेन इट इज मूविंग लाइक अ बैलगाड़ी, पैसा नहीं बनेगा. इनफैक्ट इवन इफ इट इज मूविंग विद अ जेट स्पीड, still you will not make money, because what you are expecting this jet speed nifty if it is going on the upside to do, option जो 14,700 का होगा वो पहले से एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई स्पीड से जा रहा है, इसलिए वो एक्सपेंसिव होगा, तो आप उसे बाय कर रहे. नाउ यू एक्सपेक्ट इट टू गो टू द डबल स्पीड सो दैट यू मेक मनी ऑन एन ऑप्शन एक्सपायरी डे बाय बाइंग आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन. 14,500 चल रहा है या 14,600 से चल रहा है, और आप 14,700 पे भी पैसा नहीं बना पाएंगे ऑन दी एक्सपायरी डे. ये कब होगा? ये होगा जब भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो और बहुत मोमेंटम हो और यूफोरिया हो, तब जाके ये सारी चीजें अगर मिलेगी तो शायद आप पैसा कमा पाएंगे. अगर आप ऐसे साल में 100 बार करते हैं, ट्रस्ट मी, आप ज्यादा से ज्यादा 5 बार पैसा ऑप्शन एक्सपायरी डे के दिन अगर आप बाय करके पैसा कमाने की कोशिश करें. आई एम अगेन रिपीटिंग, which means the probability of your success is going to be less than 5% if you buy hero या zero वाला game. And why this is so famous? Because people want to sell you something which is easily you can deal with, right? What you will think in your mind, you will think कि option out of the money मैं buy करूंगा, समझिए 10 रुपया चल रहा है, उसको मैं बाय करूंगा, 75 का लॉट, 750 में मुझे एक लॉट मिलता है, मतलब 7,500 में मैंने 10 लॉट निफ्टी का खरीद लिया. 7,500 में 7,500 आई बॉट 10 लॉट्स ऑफ निफ्टी, इज व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक. एंड 7,500 अगर आपने दिया, मतलब आपने 750 लॉट निफ्टी, 750 निफ्टी खरीद रखा है. इफ यू हैव बॉट 750 निफ्टी, व्हाट योर माइंड विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग, अगर निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट रैली हो गया ना आज के दिन, तो आई एम गोइंग टू मेक 75,000 रुपीज. 75,000 ही क्यों? क्योंकि 100 पॉइंट आपको मिला ना, 14,600 से 14,700 अगर निफ्टी क्रॉस करता है, 14,800 पहुंच जाता है, तो आपको 100 पॉइंट ही मिला एक्सपायरी तक. तो इसका मतलब क्या हुआ? इट्स इजी टू लुक एट इट लाइक अ लॉटरी टिकट, ओके, एंड इन दिस लॉटरी टिकट यू आर एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू रन लाइक अ फरारी एट अ वेरी हाई और लाइक अ जेट स्पीड. एंड tell me honestly, you think when you are betting on something like this, why don't you go and bet on roulette? It's much more highly probability, or rather blackjack. I'm not sure if you have played blackjack, lekin blackjack is a game in casino where chances are equally probable for you to win against the dealt hand, and that's why blackjack is a very famous game which has the probability in your favor also. Rest all of the games that you play in casino is against you. The odds are against you. Same thing. Buying an option on an expiry day means that the odds are highly against you.
So I would rather not play that probability game. I would rather go to a casino and play some other game like a roulette where my odds are at least more than the odds of buying expiry day का option. समझ में आया? So पैसा बनना चाहिए, आप कसिनो से बनाओ कि मार्केट से बनाओ कि क्रिकेट पे बैट करके बनाओ. Now those things are not legal. Whatever legal things are there, we have to try and see if we can make money from that. So if we want to make money by trading in options, what I would suggest, if you want to write option, for example, जैसे निफ्टी कल के दिन पे हमने बोला था कि ये लेवल के ऊपर गया तो बाय है, या आज के दिन पे हमने निफ्टी का बाय कॉल दिया 14,560 के आसपास, 14,560. सो यू कैन इधर डू दैट स्मॉल मूव, 100 पॉइंट्स मिल गया, लेकिन इधर एट दोज लेवल्स यू कैन राइट 14,400 का पुट ऑप्शन विच इज एटलीस्ट 2 days टू एक्सपायरी या 3 days टू एक्सपायरी या नेक्स्ट वीक का. नाउ I am not saying you trade option on the expiry day. I am saying you trade option few days prior to the expiry day to capitalize on the movement on the expiry day. Again मैं रिपीट करता हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप ऑप्शन एक्सपायरी डे पे बाय करो. मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप ऑप्शन बाय तो करना ही नहीं है एक्सपायरी डे या एक्सपायरी वीक में. आप ऑप्शन को एक्सपायरी डे पे सेल मत करो क्योंकि कुछ मिलना ही नहीं है. आप ऑप्शन को 3 से 4 दिन पहले सेल करो and then let it continue to deteriorate. Now in this game what you are expecting markets to do is, even if Nifty goes up by 50 points, your option will be in favor अगर आपने पुट राइट किया. अगर निफ्टी 50 पॉइंट नीचे भी आता है तो भी आप पैसा लूज नहीं करते. आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ यू हैव सोल्ड एन ऑप्शन से 14,400 का ऑप्शन आपने सेल किया है 3 दिन एक्सपायरी के पहले और निफ्टी चल रहा है 14,600, तो अगर निफ्टी 14,550 भी आया तो आपको नुकसान नहीं होगा. निफ्टी अगर 14,500 भी आ गया तो भी आपको बहुत माइनर नुकसान होगा और ज्यादा नुकसान नहीं होगा. अगर निफ्टी 200-250 पॉइंट गैप डाउन हो गया तो वो रिस्क हाई है कि आपको काफी नुकसान होने की गुंजाइश है. तो करना क्या है, हम 4 दिन पहले एटलीस्ट 200 पॉइंट अवे के स्ट्राइक को ऑप्शन को राइट कर सकते हैं. नॉट जस्ट कि राइट करने के लिए करना है, आपको ट्रेंड का डायरेक्शन तो पता होना ही चाहिए. सो यू शुड नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. इफ यू डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, you cannot still make money by writing a call or a put option. So don't buy the story where everyone is trying to sell you something, because it does not work. The probability will not work in your favor if you are buying option in the week of expiry. Okay, that's one. On the expiry day, you don't buy an option. That's second. If you want to make money on the week of expiry, sell option 3 to 4 days prior to the expiry so that आपको टाइम वैल्यू खाने मिलेगा. ब्रिलियंट, स्टॉक मंत्रा करके कोई है, आई डोंट नो, बट यस दैट्स करेक्ट. तो टाइम वैल्यू आपको खाने मिलेगा. दैट्स व्हाई यू हैव टू टाइम वैल्यू तो मिले. एक्सपायरी पे टाइम वैल्यू तो मिलना ही नहीं है ना, टाइम ही नहीं है. ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क किसके पास होता है, बायर के पास कि सेलर के पास? संजोति, fantastic to see you also here, and it's great to see everyone. So many of my mentees are here for listening me out. It's fantastic. Tell me, where is the risk on the option expiry day? Is it with the buyer or is it with the seller? यार इनफैक्ट ऑप्शन में जनरली भी रिस्क किसके यहाँ होता है ज्यादा, बायर का कि सेलर का? सेलर का, राइट? बिकॉज ऑप्शन जब सेल कर रहे हैं तो रिस्क सेलर के पास ज्यादा होता है. एंड यू थिंक ऑप्शन सेलर, जो रिस्क इज मोर विद सेलर, नॉट विद द बायर. रिस्क आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, सो द सेलर इज एट मोर रिस्क, राइट? Theoretically I'm talking about, not practically. Theoretically seller is at more risk because of any event. The seller is at more risk. तो अगर सेलर 10 ही रुपया डिमांड कर रहा है ऑप्शन के ऊपर, कैन यू थिंक वो रिस्क भी ले रहा है और 10 ही रुपया ऑप्शन में आपको बेचने को रेडी है? तो चांसेस है क्या ऑप्शन से बाय करके पैसा बनेगा एक्सपायरी डे पे? नहीं बनेगा ना. कॉमन लॉजिक है यार.
रिस्क इज विद द ऑप्शन सेलर ऑन द एक्सपायरी डे, और वो आपको 10 रुपया, 8 रुपया, 5 रुपए में बेचने को रेडी है, तो वो अगर आपको लगता है खाली 750 रुपये के लिए वो इतना रिस्क ले रहा है, दैट उसका ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इन द मनी हो जाए, उतना बड़ा रिस्क ले रहा है, नहीं ना। और वो दिन पे ऑप्शन राइट कौन कर रहा है मालूम है? जिसके पास बहुत कैपिटल है, क्योंकि 750 रुपये के लिए वो नहीं कर रहा है, 750 मल्टीप्लाइड बाय 100 लॉट्स, दैट्स व्हाट ऑप्शन राइटर डज ऑन दिस डे ऑफ एक्सपायरी। तो अगर वो इतने क्वांटिटी में राइट कर रहा है, तो यू थिंक ही इज an intelligent trader, or you think he is like anyone who is trading the market? He's an intelligent trader who is writing out of the money on the expiry day, right? Because of his huge volume, he is able to make something out of that market. If he is an intelligent trader, do you want to bet against that intelligent trader, or you want to trade in the direction of an intelligent trader? You want to trade in the direction. So what I am telling you do is, you get in the direction few days before that expiry day, not on the expiry day. समझ में आया what I am trying to say? So I'll continue, but people, if you are liking what I am discussing right now, you can simply click on that subscribe button on the YouTube, which is there, and you will keep getting alerts of these kind of webinars, seminars that I keep doing on the YouTube. So ensure आप उसको click करें. There is a bell icon, click on that, so that you keep getting these kind of alerts and you don't miss this kind of, you know, insights, where in this world majority of you are trying to possibly sell you something that does not work. Okay, so अभी फिलहाल बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है, निफ्टी का क्लोज प्रायर डे के हाई के ऊपर है, which happened yesterday itself. I told very clearly in my research कि प्रायर डे के ऊपर है, which means short term pullback आ रहा है. From that level, Nifty has already rallied by more than 200 points. Okay. Now, if you want to be looking at the market, there are a lot of hurdles which are present for Nifty to cross and go up. In this kind of a market, selling and making money in the option is more important. Not buying and making money, selling and making money. But when to sell is important. क्योंकि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना जानते हैं या चाहते हैं, तो कब बेचना है वो ज्यादा जरूरी है. सो टाइमिंग द मार्केट इज very crucial. In order to time the market, you will have to understand two things that I practice. One is Elliott wave or Neowave, and one is time cycles. So if you want to learn how to time the market and how to go about it, you can simply register for this program, which is happening on 8th and 9th of May, which is on time cycles, which is also going to be covering a lot of concepts on Ichimoku cloud, how to time this market. So it's crucial that you register for this program, and you can find all of the details of this program by simply clicking on the link my colleague is going to share across. You can simply go, there is an event detail, वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी, उसके ऊपर पे लिंक है, वहां से आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं using any of the tools, which is credit card or any of these things. So bottom line is, whatever you are doing, use a scientific approach to that. Don't go against the basic math. Okay, हवा का रुख अगर एक डायरेक्शन में है और आप पतंग दूसरे डायरेक्शन में उड़ाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी एनर्जी बहुत चली जाएगी. तो आपको करना क्या है? आप हवा का रुख नहीं बदल सकते. What you have to do is, possibly आप खुद का डायरेक्शन बदल दीजिए और उस डायरेक्शन में पतंग उड़ाइए जहां हवा का रुख है, तो आपकी एनर्जी भी सेव होगी और पतंग बहुत ऊपर उड़ेगी. So if you think this is what is required, you can simply do that, and don't get into the trap of people जो बोलते हैं कि आज हीरो या जीरो वाला गेम खेलना है. अगर वही गेम खेलना है तो I would rather play in casino, क्योंकि probability of me making money in casino by playing a roulette is much higher than hero or zero game on the day of expiry of Nifty. What I am again concluding and telling you is, go and write option few days before the expiry, but yes, understand to use stop loss. If you're not understanding to use stop loss, you will not make money in this market. Use a stop loss, time the market. If you want to trade, even right option is more risky. Theoretically, yes, अगर आप stop loss नहीं लगा रहे, so time the market and then you will be able to make money. Okay, are you with me?
एंड इट्स फैंटास्टिक. सो अभी के मार्केट में करना क्या है, बॉटम लाइन आप वही सोचने की कोशिश करें कि सीखा तो सही, करना क्या है. करना वही है, एक साइकिल लगाओ शॉर्ट टर्म वाला 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे, निफ्टी स्पॉट पे देखो निफ्टी का लोज कहां बन रहा है, एक रिदम मिलेगा आपको. सी वेयर द निफ्टी इज फॉर्मिंग अ लो. In that rhythmic movement of the market, when you see Nifty forming a low, after every few days, you need to get in the direction of the trend when the next low is coming in. How do you get in the direction of this trend? By writing put options if the direction is on the upside, if which is as of now. कल अगर 250 पॉइंट गैप अप हो गया तो कॉल ऑप्शन राइट करना पड़ेगा. So you need to get in the direction of those where the cycle is suggesting कि low बनने वाला है. Once that you have done, then relax, enjoy for 3 days, and on the day of expiry, you have already sold option at 30 rupees, which is now at 10 rupees. You have nothing to do. You are placed much earlier in the direction of an intelligent trader or smart trader who is selling at 10 rupees huge quantity. You sold less quantity much earlier. You are trying to eat up the time value, and you are in the direction of an intelligent investor or a trader. That's how you have to do. And उस पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कहाँ ऑप्शन के चार्ट पे देखना है, कैसे ट्रेड करना है, ये सब चीज की जानकारी आपको 8th and 9th of May को मिलेगी मास्टर ऑफ वेव्स प्रोग्राम में, वेयर वी विल टाइम हाउ टू ट्रेड दीज ऑप्शंस बाय राइटिंग और बाइंग. यस, बाइंग ऑप्शन में भी पैसा बनता है, कब बाय करना है and कब राइट करना है, along with time cycles and wave theory. That's how we are going to do that. So you, as I said, do ensure you are a part of this wonderful journey that we are going to do. So learn Elliott wave with time cycles on 8th of 9th of May. More details is in the link which my colleague has shared across. Fair enough. I think that's what I wanted to communicate. So these are exclusive sessions we are conducting for people to see and understand where is the pitfall, where is the trap. If you avoid the trap, your accuracy is anyways going to increase drastically. So this is Ashish Kyal signing off from Cloud9 Hills Resort in Lonavala. I am here. If you want to come and join me here, it's a beautiful weather. I'm not even having a fan right now. I'm just simply sitting here among nature and absolutely no noise, no sound, nothing. So it's very peaceful, and I'm sure you are going to love it once you are here. So see you on 8th of 9th of May for this program. And for any doubts or queries, you can always reach out to my number that you can see it on the screen, which is 9920422202. And on the description of this YouTube, you can also get the links, the details about the program. And also ensure, I'm again repeating, do follow me on the Twitter and ensure that you are also tweeting across your findings, your learnings. This will help me to give you some kind of a nuggets if I find anything. And also this will help you to learn and grow. So do subscribe to the YouTube channel. If you want, you can share it across with your friends, and do ensure that you are with me for all these webinars, which is, I'm doing it for you, because for me, I've learned a lot, and I want to share it across with every one of you, which is what my mission and vision is, which I'm doing in my mentorship batch, which I'm doing in my Master of Waves and Master of Technical Analysis classes. Thank you very much. Have a wonderful time. Stay safe, stay inside. And this is Ashish Kyal signing off now.